Hello guys, welcome to this session. Today we are going to discuss all important MCQs on Vijayanagar and Bahmani Kingdom. So if anyone is visiting the channel for the first time, so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon also. So let us start our session. Your first question is the kingdom of Vijayanagar was founded by A option is Vijay Raja, B option is Harihar II, C option is Harihar and Bukka and D option is Bukka II. So right answer is option C, that is Harihar and Bukka led the foundation of Vijayanagar Empire. And when the Vijayanagar Empire founded, so you have to remember it was founded in the year 1336 or 14th century. The year is very important, so please remember it. And Vijayanagar Empire ruled for 300 years in the South India. Guys, both Vijayanagar and Bahmani Kingdom ruled over the South India Empire located on the bank of Tungabhadra River. So also remember these important points. Let me move the further. So the first dynasty of Vijayanagar Kingdom was A option is Sangama, B option is Tuluva, C option is Saluva and D option is Hosala. So right answer is option A, that is Sangama. लिसन गाइस, विजयनगर एम्पायर पे जो है 4 डायनेस्टी ने बेसिकली रूल किया है। वो 4 डायनेस्टी कौन कौन सी हैं? तो देखिए, संगमा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तलुवा डायनेस्टी एंड अराविडू डायनेस्टी। जिन सभी डायनेस्टी ने मिलकर जो है अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर्स तक जो है विजयनगर एम्पायर पर रूल किया था। तो आपको इनके फाउंडर भी पता होने चाहिए। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो विजयनगर एम्पायर थी उसकी फॉर्मेशन की थी हरिहर एंड बुक्का ने, और हरिहर एंड बुक्का बिलोंग करते थे संगमा डायनेस्टी से। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट डायनेस्टी कौन थी विजयनगर एम्पायर पर रूल करने वाली, तो आपको याद रखना है संगमा डायनेस्टी, राइट। नेक्स्ट जो डायनेस्टी थी इट वॉज सलुवा डायनेस्टी एंड द फाउंडर ऑफ सलुवा डायनेस्टी वॉज सलुवा नरसिम्हा, right. Next dynasty was Tuluva dynasty and the founder was Veer Narasimha. And next dynasty is Aravidu dynasty and its founder was Tirumala, right. So you have to remember all the 4 dynasty and their founder, right. Next question is the another name of Vijayanagar city was A option is Fatehpur Sikri, B option is City of Victory, C option is Hastinapur and D option is Nagalparam. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर को जो है सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम? ए ऑप्शन इज हम्पी, बी ऑप्शन इज होसपेट, सी ऑप्शन इज बदामी एंड डी ऑप्शन इज रायचूर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हम्पी। द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर लोकेटेड एट हम्पी, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हरिहर एंड बुक्का set up a principality in the South India which later became Vijayanagar Empire, who was the Delhi Sultan? गाइस, क्वेश्चन में बात की जा रही है कि जब हरिहर एंड बुक्का ने जो है साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर की जो है फॉर्मेशन कर रहे थे, उस टाइम जो है दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो योर ए ऑप्शन इज जलालुद्दीन खालजी, बी ऑप्शन इज अलाउद्दीन खालजी, सी ऑप्शन इज मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन इज फिरोज शाह तुगलक। So right answer is option C, that is Muhammad bin Tughlaq. Guys, the question is very important, so please remember it. Next question is the Bahmani kingdom was founded in the year. A option is 1336, B option is 1347, C option is 1338 and last option is 1361. So right answer is option B, that is 1347. Let me discuss some important points related to Bahmani kingdom. So first of all, who was the founder of Bahmani kingdom? So you have to remember the name, that is Hasan Gangu or Zafar Khan. And Bahmani kingdom ruled for 180 years from the 1347 to 1527. Right. Next point is Bahmani kingdom reached at its peak during the prime ministership of Gawan. देखिए गाइस, बहामनी किंगडम जो सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ था या सबसे एक पावरफुल सिचुएशन में था, वो था ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोहम्मद गवन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। और जो डिफरेंट रूलर्स जो बहामनी किंगडम पे जो रूल करने वाले थे वो थे हसन गंगू, उनके नेक्स्ट रूलर थे मोहम्मद शाह फर्स्ट, देन मोहम्मद शाह टू, फिरोज शाह बहामनी, अहमद शाह एंड मोहम्मद शाह थर्ड, और इन्हीं के जो पीएम थे वो थे मोहम्मद गवन। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, मोहम्मद शाह थर्ड डाइड इन द ईयर 1482। फर्दर क्या होता है गाइस, मोहम्मद शाह थर्ड के जितने भी रूलर्स होते हैं, सक्सेसर्स होते हैं, वो सभी वीक होते हैं, जिसकी वजह से जो बहामनी किंगडम होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है आगे फर्दर छोटे छोटे 5 किंगडम में। वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? सो बीजापुर, अहमदानगर, बेरार, गोलकोंडा एंड बिदार, राइट।
So this is all about the overview of Bahmani kingdom. I hope that the all points will be clear to you. So let me move further. Next question is, who assumed the title of Alauddin Hassan Shah Bahman? A option is Harihar, B option is Bukka Raya, C option is Hassan Gangu, and D option is Balban. So right answer is option C, that is Hassan Gangu. Next question is, when Babur invaded India, who was the ruler of Vijayanagar Empire in South India? A option is Krishna Deva Rai, B option is Sadashiv Rai, C option is Deva Raya II, D option is Suluva Narsimha. So right answer is option A, that is Krishna Deva Rai. Next question is, the early capital of the Bahmani kingdom was? A option is Gulbarg, B is Bidar, C option is Bijapur, and D option is Golconda. So right answer is option A, that is Gulbarg. Gulbarg remained the capital of Bahmani kingdom till the year 1425, but later on the capital was shifted to Bidar, right? Next question is, which region of India was ruled by Sultan Jainul Abidin? A option is Assam, B option is Delhi, C option is Kashmir, and D option is Odisha. So right answer is option C, that is Kashmir. Next question is, who got the monumental Raya Gopuram in the front of the temples at Hampi, Tiruvannamalai, Chidambaram, Srirangam, Tirupati, etc. A option is Vidayaranya, B option is Krishna Deva Rai, C option is Harihara, and D option is Rajaraja. So right answer is option B, that is Krishna Deva Rai. गाइस एक्चुअल में जो राया गोपुरम होता था वो एक तरह से एक एंट्रेंस डोर होता था जिसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी कृष्णा देवा राय ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकल गॉडेस ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज? ए ऑप्शन इज पार्वती, बी इज दुर्गा, सी ऑप्शन इज लक्ष्मी, एंड डी ऑप्शन इज पंपा देवी. So right answer is option D, that is Pampa Devi. Next question is, the ruler of Vijayanagar promoted which language? A option is Hindi, Marathi and Sanskrit. B option is Malayalam, Tamil and Sanskrit. C option is Tamil, Telugu and Sanskrit. And D option is Telugu, Urdu and Sanskrit. So right answer is option C, that is Tamil, Telugu and Sanskrit. Next question is, who among the following Bahmani rulers built the famous Gol Gumbaz at Bijapur? A option is Muhammad Adil Shah, B option is Yusuf Adil Shah, C option is Mahmud Gawan, and D option is Ismail Adil Shah. Important one question है, so right answer is option A, that is Muhammad Adil Shah. And Gol Gumbaz is located at Bijapur, and where Bijapur is, so it is in the Karnataka. And Bijapur के जो फाउंडर थे वो थे यूसुफ आदिल शाह, बट बीजापुर में जो गोल गुम्बज बनवाया था उसके फाउंडर थे मोहम्मद आदिल शाह. तो बोथ पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में अच्छे से रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कृष्णा देवा राय बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी? ए ऑप्शन इज संगमा, बी ऑप्शन इज तुलुवा, सी ऑप्शन इज सुलुवा, एंड लास्ट ऑप्शन इज अराविडु डायनेस्टी. गाइज हमने प्रीवियस ही डिस्कस किया दैट ओवर द विजयनगर एम्पायर बेसिकली 4 डायनेस्टी रूल्ड ओवर देयर. सो कृष्णा देवा राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज तुलुवा डायनेस्टी. Let me discuss some important points related to Krishna Deva Rai. So Krishna Deva Rai, also known as Andhra Bhoj, and who was the contemporary of Krishna Deva Rai? So you have to remember the Mughal Emperor Babur. And Babur in his autobiography described Krishna Deva Rai as the most powerful ruler of India. Very important point, so please note down it. Next point है, during his reign, Portuguese traveler Dominus Pius and Duarte Barbosa visited the Vijayanagar kingdom. Important point है, two Portuguese traveler Dominus Pius and Barbosa visit the Vijayanagar Empire during the reign of Krishna Deva Rai, right? Next point है, the court of Krishna Deva Rai had 8 best poets of Telugu literature who were called as Ashtadigas, right? So these are all important points related to Krishna Deva Rai. Next question is, which ruler composed the work Amukht Malyada? A option is Sultan of Bijapur, B option is Rama Rai, C option is Harihar, and D option is Krishna Deva Rai. So right answer is option D, that is Krishna Deva Rai. Next question is, Bijapur is known for its A option is heavy rainfall, B option is rock temple, C option is Gol Gumbaz, and D option is state of Gomteshwara. So right answer is option C, that is Gol Gumbaz. Next question is, the Bahmanis of the Deccan rose to prominence in which of the following centuries? A option is 13th century, B is 14th, C is 15th century, and last option is 16th century. So I hope that कि आप इसका आंसर सही कर पा रहे होंगे. इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 14th century. एग्जैक्ट डेट की बात करें तो भामनी किंगडम की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1347, राइट. तो और इसकी शुरुआत किसके राइम में हुई थी? तब नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में? सो मोहम्मद बिन तुगलक, राइट.
Next question is which ruler of Vijayanagar had sent his embassy to the Emperor of China? A option is Harihara first, B is Bukka first, C option is Krishna Deva Raya, and D option is Suluva Narasimha. So right answer is option B, that is Bukka first. Next question is the most important cause of the downfall of the Vijayanagar Empire was. A option is rivalries within the empire. B option is unity among the Muslim rulers of Bijapur, Golconda, and Ahmednagar. And C option is rebellion of the Hindu feudatories. And D option is weak successors of the Krishna Deva Raya. So right answer is option B, that is unity among the Muslim rulers of Bijapur, Golconda, and Ahmednagar. Next question is the Battle of Talikota between the Vijayanagar and Deccan Sultan took place in which year? A option is 1550, B option is 1565, C option is 1570, and D option is 1575. So right answer is option B, that is 1565. And Battle of Talikota को जो है राक्षसी तांगड़ी वॉर भी कहा जाता है. ये एक इम्पोर्टेंट बैटल है और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है. Next question है Taraf in the Bahmani kingdom means. A option is province, B option is land grant, C option is transit tax, and D option is gold coin. So right answer आएगा option A, that is province. Guys, bahmani kingdom को जो है उसके रीजन को फर्दर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए डिफरेंट जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था जिसको कहा जाता था प्रोविंस या और तारफ. तारफ को जो कंट्रोल करने हेड होता था उसको कहा जाता था तारफदार. और अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें तो वहां पर प्रोविंस को कहा जाता था मंडलम. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द विजयनगर रूलर्स एंड द बहमनी सुल्तान? ए ऑप्शन इज. Next question is which Italian traveler visited the Vijayanagar Empire? A option is Domino's Pios, and B is Niccolo de Conti. C option is Abdul Razak, and D option is Duarte Barbosa. So right answer is option B, that is Niccolo de Conti. And Niccolo de Conti जो एक Italian traveler थे, he visited the Vijayanagar Empire during the reign of Devraya first. And Abdul Razak, he was a Persian ambassador who visited the Vijayanagar Empire during the reign of Devraya II. Right. Next question is the Nayakas in the Vijayanagar Empire were. A option is central ministers, B option is military chiefs, C option is cavalry soldiers, and D option is priests of large and powerful temples. So right answer is option B, that is military chiefs को जो है नायकास कहा जाता था in the Vijayanagar Empire में. कृष्णा गोदावरी डेल्टा और रायचूर द्वाब. B option is Marathawada country, C option is Tungabhadra, and D option is Warangal. So right answer is option D, that is Warangal. Next question is who was called the Akbar of Kashmir? A option is Jainul Abidin, B option is Hussain Shah, C option is Balban, and D option is Sujaudallah. So right answer is option A, that is Jainul Abidin. Next question is consider the following statements. यहाँ पर कुछ एक statements दी हुई है and you have to find out the correct one. A option A statement is Muhammad bin Tughlaq was the Delhi Sultan when Vijayanagar Empire was founded. Next statement is Krishna Deva Raya was the ruler of Vijayanagar when Babur took over the Ibrahim Lodhi. And third option is Rama Raya was defeated at the Talikota when Jahangir was the emperor of Delhi. So the right answer is option A, that is 1 and 2. Only the first statement and second statement is right and the third statement is wrong because during the battle of Talikota the emperor of Delhi was Akbar. Right. Next question is who were the Ashtadikas in the court of Krishna Deva Raya? A option is 8 ministers, B option is 8 Telugu poets, C option is 8 great generals, and D option is 8 advisors. So right answer is option B, that is 8 Telugu poets. Next question is which one of the following was the capital of Hosala dynasty? A option is Malkhed, B option is Dwara Samudra, C option is Somnathpur, and D option is Badami. So the answer is option B, that is Dwara Samudra. Let me discuss some other important dynasty. So Hosala dynasty capital was Dwara Samudra and Palwa dynasty capital was at Kanchi, Pandya dynasty capital at Madurai, and Yadava's capital at Devagiri. Right. Next question is Vedmark Pratishtha Karak title was assumed by. A option is Bukka first, B option is Harihar first, and C option is Harihar II, and D option is none of the above. So right answer is option A, that is Bukka first. And one more important point, Maharaja Adhiraj title was acquired by Harihar II. Next question is a forgotten empire written by the renowned historian Robert Sewell is about which one of the following empire? A option is Mauryan Empire, B option is Kushan Empire, C option is Vijayanagar Empire, and D option is Mughal Empire.
So right answer is option C, that is Vijayanagar Empire. Next question is, which Prime Minister of the Bahmani Kingdom built a madrasa at Bidar? A option is Ibrahim Adil Shah, B option is Muhammad Gawan, C option is Muhammad Gangu Bahman Shah, and D option is Alauddin Hasan Gangu Bahman Shah. So right answer is option B, that is Muhammad Gawan. And who is Muhammad Gawan? So he was the Prime Minister of Muhammad Shah III. Next question is, what is the meaning of Athwahana? A option is Revenue Department, B option is Agriculture Department, C option is Import Tax, and D option is Trade Tax. So the right answer is option A, that is Revenue Department. Next question is, which of the following empires extends from the Krishna River in the north to the south? A option is Maurya Empire, B option is Vijayanagar Empire, C option is Roman Empire, and D option is Bahmani Empire. So right answer is option B, that is Vijayanagar Empire. So guys, if you love the content, so please give a one thumbs up to video, right? Because it keeps us motivated. Next question is, which of the following Sultanate was ruled by Nizam Shahi dynasty? A option is Golconda, B option is Ahmednagar, C option is Bijapur, and D option is Berar. So right answer is option D, B, that is Ahmednagar dynasty was ruled by Nizam Shahi dynasty. गाइस फर्दर हम देख लेते हैं कि कौन से किंगडम को जो है इस डायनेस्टी ने रूल किया था, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको अच्छे से देखिएगा. तो हमने प्रीवियस ही डिस्कस किया कि जो बहामनी किंगडम था वो मोहम्मद शाह थर्ड रूलर के बाद जो है छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो गया था. वो टोटल किंगडम जो है 5 थे, जिसमें कि जो बीजापुर किंगडम था उस पर जो रूल करने वाली डायनेस्टी थी, सो इट वॉज आदिल शाही डायनेस्टी, राइट. गोलकोंडा किंगडम पर रूल करने वाली डायनेस्टी थी कुतुब शाही डायनेस्टी, एंड अहमदनगर किंगडम पर रूल करने वाली डायनेस्टी थी निजाम शाही डायनेस्टी, एंड बेरार किंगडम was ruled by इमाद शाही डायनेस्टी, एंड बिदार किंगडम was ruled by बरीद शाही डायनेस्टी, राइट. एंड आदिल शाही डायनेस्टी के जो है फाउंडर थे यूसुफ आदिल शाह. कुतुब शाही डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे कुली कुतुब शाह, एंड निज़ाम शाही डायनेस्टी के थे फाउंडर मलिक अहमद शाह. तो गाइज इसी तरह आप इसके फाउंडर भी याद रख सकते हो इन सभी डायनेस्टी के, बट जो इनके जो किंगडम थे और किस किंगडम पर कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से याद रखिएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड इन 1565? ए ऑप्शन इज चोला एम्पायर, बी ऑप्शन इज रोमन एम्पायर, C option is Vijayanagar Empire, and D option is none of the above. So right answer is option C, that is Vijayanagar Empire. 1565 से जो आपको आई थिंक बैटल याद आ रहा होगा जिसकी वजह से जो है विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल होता है, वो बैटल था बैटल ऑफ टालीकोटा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ? ए ऑप्शन इज गियासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन इज मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन इज फिरोज शाह तुगलक, एंड डी ऑप्शन इज अकबर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फिरोज शाह तुगलक. जो सिटी ऑफ जौनपुर थी इसकी फाउंडेशन रखी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इन द मेमोरी ऑफ हिज कजन मोहम्मद बिन तुगलक, राइट. तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए. हम मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड टेक केयर.